हंसराज से त्याग शक्ति ले, धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का वो दिन मान उदय। दिए विजय जय, दिए विजय जय। सुख समृद्धि इसकी लहरें, प्रेम शांति इसके तट ठहरे। सघन शांतिमय प्रबल कांतिमय लिए अटल
आप सभी को सादर नमस्ते। निष्ठा सोसाइटी, हंसराज कॉलेज, महात्मा हंसराज मेमोरियल लेक्चर एंड फेलिसिटेशन सेरेमनी, चीफ गेस्ट, इस खास प्रोग्राम जहाँ पे इस देश को संभालने वाले बच्चों को फेलिसिटेट करना था और फेलिसिटेट किया आज के चीफ गेस्ट सरदार तरनजीत सिंह संधू, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली। सर, आज के इस प्रोग्राम के आप चीफ गेस्ट हैं और देखिए हंसराज कॉलेज का इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या होगा जब कोई स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ता है, सपने देखता है, सपने देखते देखते एक दिन दिल्ली विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बनता है और आपके साथ हंसराज कॉलेज में गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर आते हैं ऐसे डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी। हंसराज कॉलेज की IQAC डायरेक्टर मैडम अलका कक्कड़, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट सीनियर मोस्ट टीचर, डॉक्टर प्रभांशु, प्रोग्राम कन्वीनर। मेरे सामने अभी अभी बात हो रही थी कि हंसराज कॉलेज ने कितने रजिस्ट्रार दे दिए। सर, अभी तो आप सिर्फ 2 ही देख रहे हैं और दूसरे हैं डॉक्टर नितिन मलिक, हमारे एलुमनाई मेंबर्स, हमारी फैकल्टी, कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मैडम विजय रानी राजपाल, कॉलेज का टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और इस देश के लिए जो पीढ़ी तैयार हो रही है, बहुत ही डियर माय डियर स्टूडेंट्स। सचमुच आपके साथ आज जो बच्चे बैठे हैं, जिनको सम्मानित किया गया, जिन्होंने आगे इस देश के लिए प्रशासनिक सेवाओं में अपनी सेवाएं देनी हैं, इन बच्चों को आज बहुत बहुत बधाई। लेकिन इन बच्चों से भी ज़्यादा बधाई इनके पेरेंट्स को कि आपने हंसराज कॉलेज पर भरोसा किया, आपने इन बच्चों को संस्कार देकर हंसराज कॉलेज में भेजा और आज ये बच्चे सेवा और विकास, महात्मा हंसराज मेमोरियल लेक्चर, जिसका टॉपिक है सर्विस एंड डेवलपमेंट इन इंडियन कल्चर। और हम बात कर रहे हैं, जब हम लोग 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और जब हम विकसित भारत की बात करें और हंसराज कॉलेज में बात हो रही है, मान्यवर हंसराज कॉलेज क्योंकि डीएवी ट्रस्ट का कॉलेज है, एक ऐसा डीएवी ट्रस्ट आज जिसकी लगभग 1000 संस्थाएं हैं, लेकिन इन 1000 संस्थाओं की यात्रा में मान्यवर जो यात्रा स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना के साथ शुरू की थी, वह यात्रा महात्मा हंसराज। आप कल्पना करिए, जिस समय 1886 में डीएवी का पहला इंस्टीट्यूट और लाहौर में 1889 में डीएवी का पहला कॉलेज स्थापित होता है, 1886 के बाद एक 25 साल का युवा, 25 इयर्स यंग मैन सामने आता है और कहता है डीएवी इंस्टीट्यूट जिसने देश की आजादी में काम किया। मान्यवर, आपने पंजाब में डीएवी मूवमेंट को देखा है, जिस तरह से आपकी कौम ने इतना सेक्रीफाइस किया, जिस तरह से आपकी कौम ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, इसी श्रृंखला में डीएवी मूवमेंट था। और वो युवा कहता है, ये डीएवी, जिस डीएवी ने अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, उस डीएवी में मैं सामने आता हूं और आज से मैं संकल्प लेता हूं, मैं किसी तरह की कोई सैलरी नहीं लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन आज से डीएवी के लिए समर्पित है। 25 साल का युवा जब ये संकल्प ले, अपने परिवार को एक तरफ रख दे, अपने तमाम सपनों को एक तरफ रखकर डीएवी के लिए संकल्प लेता है। क्यों संकल्प इसलिए लेता है कि डीएवी की स्थापना मान्यवर केवल मानना था, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रीज प्राप्त करना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र की सेवा है। और जब हम महात्मा हंसराज से बात शुरू करते हैं, और मान्यवर सरदार जी, आपने तो देश से लेकर विदेशों तक इस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया है। आपने जिस तरह से इस देश का एक संस्कृति का एक पूरा कल्चर अपनी सेवा, अपने डेवलपमेंट सोच के माध्यम से आगे रखा है। लेकिन मैं तो बैठे बैठे सोच रही थी, यदि आपके माता पिता ने, आपके पेरेंट्स ने आपको संस्कार दिए, आपकी जो फैमिली का सेक्रीफाइस था, आपकी जो फैमिली की बिलोंगिंगनेस थी, यदि आपने अपने परिवार की कितनी जनरेशन से अगर संस्कार लिए,
तो सरदार जी, मान्यवर जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने आपके सपनों को उड़ान दी। मुझे लगता है यह दिल्ली विश्वविद्यालय था, जो दिल्ली विश्वविद्यालय लगभग 104 वर्ष पूरे कर रहा है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय कहता है कि समय चाहे जितना मर्जी आगे बढ़ जाए। इस समय जो हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर योगेश सिंह हैं, उनका साफ कहना है कि आप जीवन में कुछ भी करो, आप जीवन में कहीं भी जाओ, लेकिन ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे एग्जाम्पल बनते हैं कि जहां जहां जाओगे वहां राष्ट्र प्रथम की बात करना, राष्ट्र को पहले स्थान पर रखना। जब जब हम राष्ट्र को पहले स्थान पर रखेंगे तब तब हम आगे बढ़ेंगे। और डीएवी अपनी यात्रा महात्मा हंसराज के साथ शुरू करता है, पंजाब से शुरू करता है। कई तरह की यात्राएं होती हैं, कई तरह के अध्याय देखे जाते हैं, स्वर्णिम अध्याय डीएवी के द्वारा लिखा जाता है। और डीएवी कहता है, रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में स्थापित करके दिखाता है, मानव जब जोर लगाता है, मान्यवर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। इतना आपके पास इतनी एनर्जी होती है कि पत्थर भी पानी बन जाता है, बशर्ते आपके भीतर संकल्प होना चाहिए, जो संकल्प आपके सामने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने जीवन के माध्यम से आप सबको दिया है। लेकिन महात्मा हंसराज ने जिस तरह का त्याग किया, जिस तरह का महात्मा हंसराज का समर्पण था, उस त्याग और समर्पण को लेकर 1948 में, ठीक देश की स्वाधीनता के बाद 1947 में देश को स्वाधीनता मिलती है, दिल्ली में डीएवी का पहला हंसराज कॉलेज 1948 में स्थापित होता है। और जहां से दिल्ली में हंसराज कॉलेज की यात्रा शुरू होती है। और हंसराज कॉलेज एक संकल्प लेता है कि आजादी के बाद हमने इस राष्ट्र के नागरिकों को भय मुक्त बनाना है। क्यों? क्योंकि हम सब मानते हैं जहां मन भय से मुक्त हो, जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो, सच्चा विकास वही होता है। इस संकल्प के साथ हंसराज कॉलेज आगे बढ़ता है। और जब हम मन भय मुक्त की बात करते हैं, देश की आजादी की बात करते हैं, अक्सर देश के कई कोनों से हमें सुनने को मिलता है कि देश की आजादी के नाम पर हम कुछ भी बोल सकते हैं, देश की आजादी के नाम पर हम कुछ भी कर सकते हैं, देश की आजादी के नाम पर हमें हर तरह की आजादी है। लेकिन नहीं, हंसराज कॉलेज कहता है कि नहीं, आजादी के नाम पर हर चीज की आजादी नहीं है, क्योंकि आजादी से पहले आपको सोचना है कि आप भारत के नागरिक हैं। आजादी से पहले आपको यह सोचना है आप उस संस्कृति के नागरिक हैं, आप उस भारत के नागरिक हैं जो भारत एक समय पर इस देश में सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया ऐसा ही नहीं बना मान्यवर, इस देश के लिए लोगों ने बहुत तपस्या की है, इस देश के लिए लोगों ने खून पसीना बहाया है, इस देश के लिए लोगों ने देश की सीमाओं पर रहकर अपने सपनों को, अपने परिवार को, अपनी सांसों को सब कुछ तो समर्पित कर दिया। फिर उस देश की आजादी के नाम पर हम इस देश की हवा को खराब नहीं कर सकते। ऐसे मोड़ पर सन 2026 में भी हंसराज कॉलेज कहता है कि नहीं, हम आर्य समाज और डीएवी के कारण हमारा मस्तक ऊंचा हो रहा है। मैं अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से कह रही थी कि सर, अगर हमारा राइट हैंड दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारा लेफ्ट हैंड डीएवी ट्रस्ट है। एक ऐसा डीएवी ट्रस्ट जो आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। उस आर्य समाज की स्थापना के कारण हम आज भी बड़े गर्व के साथ, बड़ी सच्ची भावनाओं के साथ, बड़े सच्चे मन से, बड़े सपने अच्छे रखते हुए हम हंसराज कॉलेज में मान्यवर यज्ञ करते हैं। और वो यज्ञ, वो जो हवन है, वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। उस हवन के माध्यम से हम दिन रात हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस देश के एक एक नागरिक को, इस देश के एक एक बच्चे को, हम सबको अच्छी बुद्धि देना, ऐसे बुद्धि देना कि हम जाने अनजाने भी इस देश के लिए कुछ गलत ना कर सकें। एक तरफ हवन के माध्यम से हंसराज कॉलेज यह संकल्प लेता है। और मान्यवर, यदि आप कॉलेज के दूसरे गेट से, इस गेट से एंटर करते हैं तो आपको इस देश का तिरंगा लहराता हुआ आपको नजर आएगा, जो कहता है इस कॉलेज के, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक एक बच्चे का कर्तव्य है कि झंडे को लहराने के लिए जिस नवीन जिंदल जी ने अपने फ्लैग फाउंडेशन की स्थापना की थी, मान्यवर, वो तो हंसराज कॉलेज के ही अलुमनाई है।
इसलिए वो लहराता हुआ तिरंगा हमें राष्ट्र प्रेम की भावना हमारे भीतर पैदा करती है। मान्यवर कह रहे थे कि अच्छा किरण रिजिजू जी भी आपके कॉलेज के रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा शाहरुख खान भी आपके कॉलेज के रहे हैं। सर अभी तो आपने कुछ चित्र ही देखे हैं, यानी हंसराज कॉलेज ने कोई फील्ड ऐसा नहीं छोड़ा। यदि डॉक्टर विकास गुप्ता जैसा रजिस्ट्रार दिया तो किरण रिजिजू जैसे, हर्ष मल्होत्रा जी जैसे राजनीतिज्ञ भी इस देश को दिए हैं, और किंग खान जैसा एक फिल्म स्टार भी इस देश को दिया है। यानी कोई भी क्षेत्र हो, आपका कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड के लिए हंसराज कॉलेज एक माइलस्टोन क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सुना ना, कोई चलता पदचिन्हों पर। सर कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है, पदचिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। हमने महात्मा हंसराज से पदचिन्ह शुरू किए थे। महात्मा हंसराज को मेरी पीढ़ी ने, आने वाली पीढ़ी ने नहीं देखा, लेकिन सरदार लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, हमने आपको तो देखा, हमारी ये पीढ़ी आपको तो देख रही है। आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हम आपको देखेंगे, आपके कामों को देखेंगे, बढ़ती हुई दिल्ली को देखेंगे, बढ़ते हुए भारत को देखेंगे, और आपके सामने संकल्प लेकर चलेंगे कि हंसराज कॉलेज इस भारत के लिए अपना सब कुछ समर्पित करता है। अपनी बात को समाप्त करते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगी, हम आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा हंसराज जी हमारे प्रेरक हैं, आदरणीय गवर्नर ऑफ दिल्ली हमारे प्रेरक हैं, लेकिन इन निर्माणों के युग में, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूले। चरित्र निर्माण भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, भारत की पहचान है। हम सब ने इस राष्ट्र के लिए चरित्र निर्माण का जो संकल्प है उसको कभी नहीं भुलाना। इसीलिए निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूलें, वसुधा का कल्याण। अपनी बात को समाप्त करते हुए, क्योंकि आज के चीफ गेस्ट पहली बार हमारे बीच आए हैं, सरदार तरनजीत सिंह सिंधु गवर्नर सर, सचमुच आज हंसराज कॉलेज गौरवान्वित हुआ। हंसराज कॉलेज की परंपरा है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आज खड़े होकर आज हम अपने चीफ गेस्ट के करतल ध्वनि के माध्यम से हम आज उनका सम्मान करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, हम संकल्प करेंगे और भारत को हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। Namaskar. Most respected Shri Taranjeet Singh Sandhu ji, Honorable Lieutenant Governor of Delhi and Chief Guest of today's function. Respected Madam Rama, Principal, Hansraj College. Professor Alka Kakkar, Vice Principal, Shri Prabhanshu Oja, Convener, Nishtha Society. Professor Gajendra Singh, Chief Vigilance Officer, University of Delhi. Shri Bharat Bhushan ji, Dr. Nitin Malik, Madam Vijay Rani Rajpal ji, members of the Nishtha Society, members of the governing body, invited dignitaries, esteemed teachers and officials, my dear students, their proud parents, ladies and gentlemen, Namaskar. बड़ी समस्या में डाल देती है रमा मैम जब अपने कॉलेज में बुलाती हैं, इतनी ओजस्वी स्पीच अपनी देती हैं, फिर बाद में हमारा नंबर लगाते हैं, उसके बाद तो एलजी सर की स्पीच होती है। तो कुछ तैयारी हम करके आते हैं, वो बाकी मैडम की स्पीच सुन के हम भूल जाते हैं। बट टुडे इज अ डे ऑफ अचीवमेंट ऑफ सेलिब्रेशंस। एट द ऑनसेट आई कन्वे my sincere gratitude to my own college authorities for inviting me to be part of this ceremony. I am humbled and feeling privileged to be part of this occasion. This day is indeed an important moment in the life of young achievers and every student, because it is the occasion where, on successful completion of their studies and extracurricular activities, students are formally felicitated for their achievements. I congratulate all the achievers on this historic moment of their lives. I also share with the teachers and the parents their joy and happiness on the success of their students and wards respectively. The happiness is never individualistic
as it only resonates when it transforms, and the happiness of college always transcends beyond the college when its young achievers enter the real world and leave an impeccable impact on the entire nation. It is due to the fact that any dynamic and constantly moving forward society and nation look upon the youth for a better future of the nation. The knowledge, skill, and the values that you have learnt during the years in this college shall enable you to build your own lives. More importantly, I am hopeful that this will also contribute to the making of a better India, which will be passionate for connecting the dots by not only looking forward but also turning backwards to make this world a better place for humanity. My dear young achievers, be passionate for your dreams and take all necessary steps for fulfillment of such dreams. My dear achievers, you all are our pride, and please maintain this throughout your life. The college was fortunate to have you on its roll, and your accomplishments will make the college proud of its inner pace and faith that drives it to make leaders like you each. I wish you all the very best to achieve greater heights in all walks of your life and lifestyle both. This is my third program when I am sharing my thoughts with Honorable Lieutenant Governor of Delhi. And you will be very pleased to know one real essence of this great man, that he is so humble and polite. We have never seen any Lieutenant Governor in Delhi who has been so humble and polite. Sir, we are really thankful to you for your humbleness and politeness. Sir, Rig Veda, being the earliest text, has highlights. A person can achieve everything by being simple and humble. And sir, I'm sure that this attribute of yours has given you this height where you are standing today. Thank you so much, sir. And I would request all my students achievers also that you should always remain humble and polite, and you will always earn the greater heights which you wish to. I would like to share two lines, sir, for you, sir. And these two lines were quoted by Shri Rahat Indori ji. वो शख्स जो झुककर तुमसे मिला होगा, वो शख्स जो झुककर तुमसे मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा. Thank you so much, sir, for being part of this ceremony, sir. Sir, I would also like to add few more quotes, because everybody is looking for the society, everybody is looking from the society, everybody is looking from the nation, but at the same time it is our also duty to give back to the nation, give back to the society, and that is our moral responsibility also. I was seeing the today's news also, and I was very happy to see my colleagues from our country, that the media persons were talking them about the rise in the fuel prices. And one major thing which I heard, everybody was saying that we have to contribute for the nation. The price rise of 3 rupees is just nothing. And if we have to do something more for our country, we are ready to do for that. So this is the changing condition of our Bharat की हमारे लोगों का mindset change हो रहा है कि we are looking forward for a country where we have to give back to the society. Sir, लोग वो भी परेशान रहते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, जिनको सब कुछ मिलता है वो भी परेशान है, जिनको कुछ नहीं मिलता वो भी परेशान हैं. तो सर चंद लाइनें आपकी परमिशन से. ये ना पूछना कि ज़िंदगी खुशी कब देती है, ये ना पूछना कि ज़िंदगी खुशी कब देती है, शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें ज़िंदगी सब देती है. और हमारे वाइस चांसलर सर हमेशा ये कहते हैं, ज़िंदगी में देने वाले बनना, देने वाले ही ज़िंदगी में बड़े बनते हैं. एक और बात, कभी भी ज़िंदगी में रोने वाले मत बनना. कुंवर बेचारी की कुछ पंक्तियां हैं सर. अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, ज़िंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है. नेक काम में देरी ना करिए साहेब, नेक काम में देरी ना करिए साहेब, देर होती है तो होती ही
चली जाती है। तो आप लोगों को अपने सारे एफर्ट्स जितनी अच्छाई देनी है उसमें देनी ही चाहिए। सर, मैं ऑन बिहाफ ऑफ वाइस चांसलर I convey my sincere thanks to you to be part of this program, sir. और सर, if you permit, हमारे वाइस चांसलर साहब का ये हमेशा से ये संदेश रहा है जो मैम ने चंद शब्दों में कहा कि we want a promise from all of us that we will not do anything in our lifetime which is against the interest of our country and will make life big with hard work, truth and discipline. So I would request all of you to take this oath by raising your hand that we will not do anything against our country. Please raise your hand so that this is a promise for all of us to the nation that we will be with the country in all times to come. Thank you so much. Thank you so much. Namaskar. Thank you so much, sir, for your encouraging words. And now, the moment we all have been eagerly waiting for, I humbly invite the Honorable Chief Guest to inspire the gathering. प्रोफेसर रमा जी, आपने जो मुझे मेंशन किया वो बहुत सही है कि आपके पास वाले कॉलेज को आपने कई डिकेड से बीट कर दिया फर्स्ट वुमेन प्रिंसिपल बन के। डायरेक्टर अलका कक्कड़ जी, कन्वीनर ऑफ द सोसाइटी Dr. Oja ji, distinguished guests, faculty members, and of course, my dearest students. India's civilizational journey has always viewed development not merely in material or economic terms, but as something closely connected to ethics, duty, social responsibility, and collective welfare. In our tradition, progress has never been separated from service. The idea of seva has historically remained central to how Indian society understood leadership, education, and nation building. From ancient scriptures to modern nation building efforts, the Indian worldview has consistently taught that an individual's progress is meaningful only when it contributes to the well-being of the society. The foundations of this philosophy can be found in the Vedas and other ancient texts which emphasize harmony, duty, and universal welfare. These principles shaped a culture where helping others, supporting the vulnerable, and working for common good became moral responsibility. Our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has emphasized in Indian culture, development is viewed in a holistic manner. It is not limited to economic growth or material prosperity. True development includes moral progress, social harmony, environmental balance, and cultural strength. His words remind us that the values of service and responsibility be carried forward by the younger generation who hold the key to India's future. Across the globe, societies that place their youth at the heart of the development have consistently shown innovation and long-term strength. Mahatma Hansraj ji represented precisely these values. He belonged to a generation that saw education not merely as a path to personal success, but as an instrument of social transformation and national awakening. At a remarkably young age, he dedicated himself to institution building and public service. The institutions he helped nurture were built on discipline, sacrifice, character, and a larger sense of responsibility towards society. Indian traditions
have long advocated balance between human needs and nature, encouraging sustainable living and responsible use of resources. Village communities, local self reliance, and collective participation were historically important elements of India's social structure. That vision remains relevant even today, especially as India moves forward the goal of Viksit Bharat at 2047. Modern India continues to draw inspiration from these cultural values. Efforts towards inclusive growth, social justice, and environmental conservation, public welfare, and community participation reflect the enduring influence of India's civilizational ethos. The spirit of voluntary service during natural disasters, community initiatives, and social campaigns demonstrates how deeply the idea of collective responsibility remains embedded in Indian society. Thus, service and development in Indian culture are deeply interconnected. Service gives development a humane and ethical foundation, while development ensures dignity, opportunity, and progress for all sections of society. Together, they represent the vision of an India that grows not only in strength and prosperity, but also in compassion, responsibility, and social harmony. On this note, I would like to congratulate the students being facilitated today for qualifying the UPSC and state civil services examinations. But But you must carry on with you this mantra as you enter a prestigious service. Public service is not a privilege, but a responsibility. Civil servants occupy positions where decisions directly influence the lives of citizens. The quality of governance in any nation ultimately depends upon integrity, competence, empathy, and commitment of those who enter public institutions. As you begin this journey, remember that administration is not only about authority, it is about responsibility. It requires patience, balance, humility, and the ability to listen. The finest public servants are often those who remain grounded, accessible, and conscious of the larger purpose behind their work. For students who are present here today, you are moving in an increasingly competitive and uncertain world. One important lesson is that success should never be viewed only in personal terms. Every profession, whether in government, academics, business, technology, law, media, or the arts, ultimately contributes to shaping the society. The question is not only what career one chooses, but also what values one brings into that profession. India today stands at an important moment in its history. The coming decades will demand strong institutions, scientific thinking, social cohesion, innovation, environmental responsibility, and ethical leadership. Achieving the vision of Viksit Bharat 2047 will therefore require not only policy and investment, but also character and collective responsibility. That is why the life and legacy of Mahatma Hansraj ji continues to matter. He reminds us that institution building requires patience, that education must remain connected to values, and that service to society is not an abstract ideal but a lifelong commitment. The students remain curious, disciplined, and rooted. The world will continue to change rapidly,
but integrity, compassion, hard work, and a sense of purpose will always remain relevant. May you continue to contribute meaningfully to your communities, your institutions, and to your nation. Thank you. Jai Hind. Namaskar. It's a matter of great honor and privilege for me to propose the vote of thanks at the Mahatma Hansraj Memorial Lecture and Felicitation Ceremony organized by the Nisha Society of Hansraj College. Today's occasion has been a celebration of service, aspiration, and the values that continue to shape institutions like ours. The theme of today's lecture, Concept of Service and Development in Indian Culture, reminded us that in the Indian ethos, true development is always rooted in responsibility, compassion, and service to the society. As we move towards the vision of Viksit Bharat at 2047, the role of ethical and committed public servants becomes more important than ever. I express our heartfelt gratitude to our chief guest, Sri Taranjit Singh Sandhu, Honorable Lieutenant Governor of Delhi, for gracing the occasion and sharing his valuable thoughts with us. Sir, your remarkable journey in public life and diplomacy reflects dedication, integrity, and service of the highest order. Your words today have been deeply inspiring, especially for the young civil servants we are felicitating today. For them, your presence is not just ceremonial, it's deeply motivating and aspirational. We are also thankful to Dr. Vikas Gupta, Registrar, University of Delhi, and a proud alumnus of Hansraj College. Sir, your journey from these very classrooms to a position of distinguished leadership is a source of immense inspiration for our students and a matter of great pride for our college. Our sincere gratitude to Principal Professor Rama, whose constant encouragement, vision, and support continues to guide and inspire us. I would also like to thank Dr. Prabhanshu Oja and the entire team of Nisha Society, Shakti Society, and Udan Debating Society for their dedication and tireless efforts in organizing this event so beautifully. And finally, to the former students who were felicitated today, your success is a moment of immense pride for us. Every success story that was honored today carries with it years of effort, self-belief, and perseverance. You have become an inspiration for countless students who will look at your achievements and believe a little more strongly in their own dreams. May your journey ahead be guided by purpose, integrity, and the desire to make a meaningful difference. And last, I would like to thank all of you who made the effort of coming here today and being present here. Thank you so much.